Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic news and editorial analysis where I'll be covering the news from Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. And additionally, I'll be supplementing some important content so that they can help in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 24th of May. The first topic is Cyclone Yes on the Bay of Bengal coast. Second, UK to unveil the plan for digital border. This is on the line of United States of America. Third is improving public health at grassroots. This is an editorial. We are considering two editorial today. As we know that mostly I try to cover at least two important editorial so that can give you an insight and a holistic idea about writing in the mains examination. The second last, again the editorial, many benefits of an eco tax. And the last is concerns over the new norm for the appointment of auditors. Right? So these are some of the important news as well as editorial from today's newspaper. Apart from this, at the end of this session, there would be some MCQs questions that will help you in the upcoming prelims examination. So before I start, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. I will start our news analysis one by one. So first is Cyclone Yes on the Bay of Bengal coast. So orange alert has already been placed by the Government of India, and this is important for your General Studies paper 1. Important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity and cyclone. And talking about prelims examination, cyclone is something which is very important. There are two cyclone, Tokak and other Yas is there. So make sure आप इसके बारे में cyclones के जो concepts है वो पढ़ ले, because this become very relevant for your prelims examination as a concept. So what is there in the news? A new cyclone storm. This is second cyclone storm which would be coming in India, and yes, is likely to form in the Odisha coast. Mostly you can see in the entire Bay of Bengal region. So a depression over the east and the central Bay of Bengal is being generated, and it is likely to move in the northwest direction. जो पूरी movement होगी from east central to northwest की तरफ direction होगी, and it will intensify according to the movement, right? So this point is again important. And system Yes is expected to cross the coast of North Odisha and West Bengal between the Paradip and the Sagar Island, which is have a severe cyclonic storm. So Paradip is again an important port. Sagar Island is again, which is very important in West Bengal. So location wise, you have to also understand that which particular port and which particular area is coming under the alignment, right? And the name of the cyclone is given by Oman. So talking about the cyclone, this was named, Yas was named by Oman country. Now this is how a brief infographic that will tell you about everything about Yas. So it's a heavy to heavy rainfall, heavy to very heavy rainfall, and it is expected to take place in Andaman and Nicobar Island as well. So on 23rd and 24th, it already took place in that particular area. It is expected to move in West Bengal and Odisha, gradually coming out in the Sikkim. And the wind is around 60 km per hour. Gradually it increases. जैसे कि center से north east की तरफ बढ़ेगी Bay of Bengal में, the speed is going to increase. And the maximum speed is around 155 km per hour, and it can go up to 185 km per hour. So you can see the speed. This is a release from Ministry of Earth Sciences, Government of India, and this is the reason where it shows the low pressure areas being created. Now an orange warning has already been issued by the Government of India. So the weather department has issued an orange warning for the heavy rainfall, and they're looking for isolate the place. Some areas, I'm naming some of them. If you're residing in any of these area, make sure you take care of yourself. और आप लोगों को बता भी सकते हैं अगर कोई इस एरिया में रह रहे हैं तो already they would be informed by the basically the district administration. Jhargram, Medinipur, North and South 24 Parganas, Havda, Hooghly, Calcutta in West Bengal, and Jagdishpur, Kendrapada and Bharatdag and Balashore in Odisha. So these are some of the area where it would be mostly prone, and heavy to very heavy rainfall is predicted in some part of North Bengal district as well.
Now, what is the preparedness? How government is preparing? They are definitely preparing well. NDRF, which is a dedicated body, a force, they have deployed a lot more force over there. So Prime Minister ने basically review ली what is a exact preparedness. They have called the state government, the central government is coordinating with these agencies to control the landfall in the cyclone years. And India has placed its military aircraft warship on the standby to rescue relief ahead of cyclone years, मेकिंग जो लैंडफॉल्स हो सकती हैं खास करके कंट्री के ईस्टर्न कोस्ट में, उसको बचाने के लिए, राइट. सो ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेज, एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम आर ऑलरेडी डिप्लॉयड टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरियाज, राइट. सो दिस इज हाउ द प्रिपेयर्डनेस हैज बीन डन. Now, UK to unveil the plan for digital border. So again, important news from international point of view, and again something which is very important for your prelims examination also. So effect and politics and policies of developed and developing countries. What is the details of this news? जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उन्होंने रियलिस्टिकली प्लान किया है कि they would be digitalizing their borders, right? So as I can tell you, वहाँ के जो इंटरनल मिनिस्टर है प्रीति पटेल, she is an Indian origin. So they have taken that decision in the parliament, and they are about to digitalize their entire border, right? So they would the entire aim of this is to allow a accurate counting of the people entering and leaving the country. So एक बहुत ही important steps हैं जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने किया हुआ है. दिस इज यूके इज अनदर कंट्री, जापान, साउथ कोरिया, दिस कंट्री आर डूइंग. बट इंडिया में अभी इस तरह की डिजिटलाइजेशन नहीं की गई है बॉर्डर में. विल सी व्हाट इंडिया हैज डन ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. Now, the Britain government has introduced UK style electronic travel authorization, जिसको प्री चेक की जाती है जब भी कोई इंटर करेगी यूनाइटेड किंगडम. Now, tightening the immigration rule and securing border is the key. What the Prime Minister has said, who has argued कि जिन्होंने already पहले वहाँ पे जब EU के साथ Brexit हुई थी रेफरेंडम में, they have already said that the major part and the proportionately they will be prioritizing the strengthening of immigration rule, right? So this was already promised during 2013 Brexit referendum. Now, advantages of the digitalization of border. इसके क्या क्या advantages हो सकते हैं खास करके यूके के लिए और इन जनरल किसी और कंट्रीज के लिए. So the digitalization of border will provide an ability to count people. जो भी लोग एक जगह से दूसरे जगह पे आ रहे हैं तो उसकी काउंटिंग इंप्रूव होती है, and you have a lot more accuracy to count the people who is coming out, who is going out, and whatever situations take place. एक आपके पास database होता है for that particular immigration people. And the new approaches will make it easier to identify potential threats before they reaches to the border. और ये जो नई प्लान है that would be coming to India without a visa, जो भी ऐसे लोग हैं without visa या without immigration status के जो आ रहे हैं, so the same thing would be applying to them, जिस तरह से अमेरिका ने अमेरिका स्टाइल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की हुई. Now the Home Office, that is the Internal Ministry of the Britain, they are expected around 30 million ETA, that is electronic travel authorizations application उन्होंने process की है एक साल में, right? So this is the figure from UK, and they have prioritized they require the digitalization, something which is very important. And in meanwhile, what India can learn a lesson that we can also gradually move up in doing so, right? So कहीं ना कहीं जो foreign countries में, abroad countries में, जो developed countries है, they are doing so. So India can take a lesson from this. Now some system, some ID system which is already in there. अगर एस्टोनिया की बात करें, उन्होंने नेशनल ID सिस्टम रिलीज की थी 2002 में, जहाँ पे सिटीजन ऑफ एस्टोनिया प्रोवाइडेड विद डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, हेल्थ सर्टिफिकेट दी जाती है. तो एक डिजिटल मीडियम से जो और कंट्रीज कर रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. द जापान में वैसे ही माई नंबर, माई नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम 2016 में लॉन्च की गई थी to streamline the function of sharing between the government agency, administrative taxes and social security के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स लाए गए थे. इंडिया में we know there is a database called unique IDs, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो आधार, which is there. उसके अलावा there is an initiative called initiative that for the potential to streamline the Indian bureaucratic complex process, जो कि टैकल करेंगे बहुत सारे challenges को, such as welfare and the intended recipient, enable accessibility such as banking. सो इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डेटाबेस की तरह पे तैयार है, बट वी नीड टू स्ट्रेंथन सिस्टम मोर सो दैट वी कैन एक्यूरेटली वर्क अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न नॉर्म्स. Now, improving public healthcare at grassroots level, a very good editorial written by
Durga Sakti Nanpal. She is an IAS officer, and she was there in the news for the sand mining scam allegation, which she has already she has done a great job in the sand mining. So she is known to be one of the best officers in particular in the country, and she has written about improving how healthcare system can be improved at grassroots level. So this type of things you can definitely include in your general studies paper 4. जब भी केस स्टडी के सवाल आप करें, आप उसमें इस तरह के पॉइंट्स जरूर इंक्लूड करें. These opinion are although being shared by a bureaucrat, so it will practically help you to understand and correlate with the case studies. So before I proceed, you have to understand what is the issues under this editorial. So अगर थीम की बात करें तो बात की गई है कैसे पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो ग्रासरूट लेवल पे इम्प्रूव की जा सकती है, फ्यूचर कोविड वेव्स और उसके क्या क्या वरीसम होंगे, डिसीजन दैट वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्या क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है हमें एट अर्लीस्ट, नीड फॉर द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की बात की गई है और वे फॉरवर्ड. सो विल अंडरस्टैंड each and every point one by one. I have segregated this editorial in this subsection so that it become more understandable to you. So as per the latest Human Development Report 2020, उनके मुताबिक ये पता चला है कि India has 8 hospital bed for per 1,000 people. So for हर 10,000 पे हमारे पास 8 hospitals हैं. Now you compare that with China, it has 4 hospitals for just 1,000. So this is a comparison. China, as again, they have a robust healthcare system. India is definitely lacking behind. So जिस तरह से second wave के time में इंडिया ने struggle किया है, we are talking about the remedial strategy. At this point of time, it is very important. और pandemic ने हमें एक opportunity दिया. They have given us opportunity so that we need to largely work upon our public healthcare apparatus, which is not in good shape. So these are some medieval type of infrastructures they are being built. We need to have our healthcare system more robust, more sustainable, so that we can overcome the problem of any future pandemic. Now future COVID waves और उसके worrisome क्या क्या हैं. अगर future में third wave आती है, which is being anticipated, we all of us are of the opinion that it should not come. We are praying that this third wave do not continue in India, but if it could happen, what are the worrisome that is going to continue, right? So if third wave continues, it is likely to be a worse, because बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत बुरी तरह से affect होगी, especially in the rural area, because this particular area have poor medical infrastructure. They have shortages of vaccine for all eligible individual, not only for the rural area, even in the states like Delhi is witnessing the shortfall of vaccines. Now वैक्सीन हेजिटेंसी भी ये बहुत ज़्यादा है. अगर आप रूरल पॉपुलेशन की बात करेंगे, रूरल में लोग वैक्सीन लगाना नहीं चाहते. दे आर स्कैर्ड दैट दे वुड हैव अ फीवर, दे वुड हैव फर्दर डाइड. सो दीज आर सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस एंड वैक्सीन हेजिटेंसी विल स्टिल कंटिन्यू इन द रूरल इंडिया. नाउ कंस्ट्रेन ऑन सोर्सिंग द इंग्रेडिएंट इंटेंडेड टू मेक द वैक्सीन, ये भी एक प्रॉब्लम है इंडिया के पास, क्योंकि वी हैव बीन ट्राइंग विद द यूएस ताकि जो हमें जो रॉ मटेरियल्स है वैक्सीन बनाने के लिए वो मिल पाए. डेडलियर वेरिएंट ऑफ द वैक्सीन, एज द वायरस इज म्यूटेटिंग, इट इज गेटिंग मोर एंड मोर डेडली. नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस इम्पैक्टिंग द चिल्ड्रन, इट इज बीइंग आर्ग्यूड. एक्सपर्ट का कहना है कि थर्ड वेव में इट इज हाईली चांसेबल दैट द पीपल, मोस्टली द चिल्ड्रन, वुड बी मोर सब्सेप्टेबल टू दिस वायरस. गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन ली है अभी तक. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोबिलाइजिंग टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ दे हैव अडॉप्टेड एंड इनोवेटिव आइडियाज, और एक नेशनल टास्क फोर्स भी बनाई गई है दैट हैव कंस्टिट्यूटेड अंडर द सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन. सो दीज आर द थिंग्स दैट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डन टू इंश्योर कि ये चीज़ें और बिगड़े ना. Now it is hopeful that it will offer the recommendations to shore up the healthcare infrastructures. Healthcare infrastructure को robust करने की ज़रूरत है, so that it can make us capable to overcome this pandemic. Now measures that must be adopted. I say that must be adopted at the earliest by the government, right? If I talk government, I mean central government and the state government, both. So attention must be paid in strengthening the healthcare sector. Talking about the primary healthcare sector or the local public healthcare sector is something which is very important, right, at this point of time. और ये ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि that no patient has to travel beyond 10 to 15 kilometers in urban area or 20 to 25 kilometers in rural region.
So this would be our criteria to establish and basically to build a hospital infrastructure or healthcare infrastructures. Arrangement की जानी चाहिए that can alone reduce the likely number of fatalities, जितनी भी fatalities हैं वो कम की जा सके. The epicenter of the decentralized program should be there. एक district headquarter बनाने की जरूरत है जिसमें जो district administration होगी, जो DM होंगे, जो district collectors होंगे, they would be monitoring the situation. And managing group should be created to headed by the district magistrate or the senior most nominated by him, right? So this is how we need a robust program. This is called a bottom up approach, right? जैसा कि आप इस editorial के title में पढ़ेंगे. And I always used to say, अगर आप सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, इफ यू गो इन एनी ऑफ द सर्विसेज बाय द सिविल सर्विसेज, मेक श्योर योर अप्रोच शुड बी बॉटम अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच आप करोगे, दिस इज सक्सेसफुल अप्रोच इन इंडिया, दिस इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच करने की बात की गई है, जो ग्रास रूट लेवल पे पहले काम करके फिर हमें ऊपर उठना है. नाउ नीड फॉर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप और मैनेजिंग ग्रुप. सो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप फॉर्मली नोटिफाई की जानी चाहिए और उसके साथ उसमें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल पावर दी जानी चाहिए. सो दे शुड बी बेस्टोड विद स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर. और ये जो पावर है वो मैंडेट करेगी दैट दे मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इंक्लूड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. और क्या क्या चीज़ें उन्हें दी जानी चाहिए. फर्स्ट, टू नोटिफाई अ कमांडर ऑफ ऑल लिस्टेड मेडिकल केयर्स, जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी को उनके सेंटर्स में या फिर जो पब्लिक हॉस्पिटल है, मेडिकल सर्विसेज हैं, पब्लिक हेल्थ केयर इमरजेंसी है, दे कुड मेक इट मोर प्रैक्टिकल एंड मोर स्ट्रेंथनिंग टू द पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स. बेसिकली जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है उसको लेकर के. सेकेंड, टू मेक ऑल लॉजिस्टिक अरेंजमेंट इन एडवांस ताकि जो पब्लिक इंगेजिंग है प्राइवेट एसेट्स उनको यूटिलाइज की जा सके. थर्ड इज टू डेवलप द मेडिकल सेंटर्स रिक्वायर्ड द स्पेशलाइजेशन सर्विस लाइक ICU है, राइट. ICU इज रिक्वायर्ड, इंटेंसिव केयर यूनिट, दिस इज कॉल्ड ICU. और भी ऐसे जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बनाई जा सके. Now fourth is to maintain and upgrade existing PHC जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर हैं या जो सेंटर्स हैं, that has to be more and more in the rural areas. Fifth is to declare the containment zone जो कि इंश्योर करेगी तो citizen is meticulously abiding the precautionary norms. So they should be well aware, people should be well aware and they should be adequately informed about the consequences. So they should be asked to wear mask and sanitize their hand, maintain the social distance. Sixth is to tackle the leakages जो भी ब्लैक मार्केटिंग है, जैसा कि हमने देखा था रेमडेसिविर ड्रग्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हुई. सो वी हैव टू अवॉइड दिस. 7, to fix the priorities and special focus should be there for the speedy testing, tracking and vaccination. But although India is lacking with the vaccination, the vaccine sample productions come, very soon we'll see that in the coming month it might gradually increase. And the last is to keep the general population informed about the daily medical care facilities that is available in their nearby hospital or primary healthcare centers. Now, what the way forward you can write in the examination, how you can conclude this. So you can write that the pandemic is an opportunity. एक opportunity है जहाँ पे we can build our medical public healthcare infrastructure more modern, more robust, more practical. It should be more reliable to the poor people. And micro level पे बात करें, district level पे बात करें, we need to have a task force that should be empowered to work at the macro level, right? और सारे states जो हैं उनके साथ एक action plan होने की ज़रूरत है that should be in consonance with the public healthcare program. जो central government की जो guideline है that should be equally implemented in the states. And Indian bureaucracy can help to plug the gaps and swiftly create a healthcare structure accessibility in any grave situation that can arise in the normal time, right? So this is how the way forward can continue. And talking about the other bottom up approach which I have told you in the beginning, so bottom up approach will not only help to blunt the possible surges in the COVID-19 but जो भी ज़रूरी infrastructure ज़रूरतें हैं अगर bottom up approach की जाए तो we can gradually build it and over the time we would be in a position जहाँ पे हम सारी चीज़ों को आराम से handle कर पाएंगे. So this is a way forward which you can continue in the examination. Now, the many benefits of an eco tax. This is an editorial reported in the Hindu, and this can be important for your general studies paper 3. Conservation, environment, pollution, degradation, environmental impact assessment. So I'm continuing these two editorial at once simultaneously because many of you have suggested and given your opinion that sir, we want that editorial to be discussed in one go.
If you have any other suggestion, you can let us know, or you want me to continue editorial at one go and other news at one go. Do let me know. Your suggestions are more valuable to us. Now, what are the issues that I'm going to discuss under this editorial? So the theme of this editorial is advantages of an eco tax. उसके अलावा जो सब हेडिंग्स हैं जिसपे मैं ये सारे एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज द हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ, रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, फिक्सिंग द इको टैक्स रेट, एनवायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म की ज़रूरत है, टारगेट्स ऑफ इको टैक्स एंड अडॉप्टिंग एनवायरमेंटल फिजिकल रिफॉर्म, राइट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जब बजट पेश किया था, सो दे हैव अनाउंस्ड अ स्टिमुलस पैकेज, बट फिजिकल डेफिसिट की बात करें, दे हैव ग्रेजुअली बीइंग increasing. It is almost 9.5% of the GDP, or 2021-2022 के लिए it is projected this is 6.8%, right? So the focus is on maintaining the fiscal discipline, and this is peculiar scenario जहाँ पे एक sustained healthcare finances की हमें बहुत बड़ी ज़रूरत है, and India is posing a challenge of healthcare infrastructure. So how we would overcome this problem, और क्या क्या ऐसे taxations हैं जो India कर सकती है practically, feasibly, so that it do not impact masses also. Now household spending की अगर बात करें healthcare पे, so WHO has provided a data that shows that the percentage of total population where household expenditure on the health is greater, right? So the healthcare जो investment है, that is between 10 to 12%, which is pretty high compared to the developing countries, right? जो expenditures हैं इंडिया में, उसमें से 10 से 25% जो है लोगों की अपने इलाज में हेल्थ केयर में चली जाती हैं. सो दिस प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर कि जो हेल्थ केयर में स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो रही है इवन इन द अर्बन पॉपुलेशन, एंड एज फार एज हेल्थ एक्सपेंडिचर इज कंसर्न इट इज 10%, राइट. एंड 17.3% इन द पॉपुलेशन इन इंडिया मेड आउट ऑफ द पॉकेट इन्वेस्टमेंट फॉर द हेल्थ केयर. तो 17% ऐसे लोग हैं, इट इज क्लोज टू 17.5% पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पेमेंट का मतलब है कि उनके अपने सैलरी से खर्च हो रहे, गवर्नमेंट इज नॉट अवेलिंग दैट बेनिफिट्स. सो द परसेंटेज वाज हायर इन रूरल एरिया कंपेयर टू द अर्बन एरिया. और अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, सो दिस इज 60%, more than 10% of the household in the health in terms of household income to the health, right? So this is about the India and Southeast Asia. I'm not comparing that world because ये data ही आपके लिए काफी है. Reducing out of the pocket expenditure, this should be the focus of the government, and which is was already being envisaged in the economic survey 1920, जिसने outline किया कि जो हमारी spending है हेल्थ केयर सेंटर में वो बढ़ाने की जरूरत है फ्रॉम 1% टू 2.5% टू 3% ऑफ द GDP. सो यू कैन सी वी एज एन कंट्री हैव वेरी लो फोकस एंड वेरी लो प्रायोरिटी इन आवर हेल्थ केयर सेक्टर, बिकॉज ऑफ विच द कोविड हैज लेड टू द डेथ ऑफ सो मेनी पीपल, राइट. सो दिस वॉज ऑलरेडी बीइंग एनविसाज्ड इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, बट अभी तक जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर्स है, पॉकेट एक्सपेंडिचर्स इंडिया में है ओवरऑल अगर बात करूँ, सो दिस इज अमाउंट टू 65 to 30%. Now this is where the importance of alternative source of healthcare India is needed. It is being stressed कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह चीज़ों पे काम करने की, and we need to work on to think upon the climate change which can preserve our environment also. Right now we gradually shifting to the environment part. Now physical reform की बात करें, managing the environment is again something which is very important. और यहाँ पे ये potential है कि इस तरह इसमें अगर जो इनकम टैक्स खास करके अगर बात करें इकोनॉमिक टैक्स जो है, दैट कैन बी देयर टू ओवरकम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज बीइंग डन बाय द फैक्ट्रीज एंड अदर थिंग्स. नाउ फिक्सिंग इको टैक्स रेट, हमें इको टैक्स रेट फिक्स करने की जरूरत है. सो द इन्वायरमेंटल रेगुलेशन इन टर्न हैव अ सेवरल फॉर्म, उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं लाइक कमांड एंड कंट्रोल, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल टैक्स दैट इज इको टैक्स फॉर सब्सिडीज, और कैप एंड ट्रेड. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन फिक्स. और इंडिया ने करेंटली फोकस किया है ऑन कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच टू टैकल द पॉपुलेशन. सो वी आर प्रेफरिंग द फर्स्ट वन to control the overall population in this country. और अगर बात करें success of eco tax in India would depend upon the architecture, that is how plan and design are being implemented. Now it should be credible, transparent and predictable so that we can actually predict what is going to happen. And this requires an evaluation of damaged environment based on the scientific assessment. So there should be a scientific backing to create this and implement this. Now environmental tax reform की अगर बात करें, so the environmental tax reform generally involve
3 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज एलिमेंटी एग्जिस्टिंग सब्सिडीज, जहाँ पे taxes that has to be harmful impact on the environment, उस पे tax we can conduct. Restructuring the existing tax on environmentally supportive manner and initiating the new environmental tax. So this is what India need to done to overcome the problem of environmental consequences. And in developing countries like India, revenue can be used for the greater extent in the provision of environmental public goods addressing the environmental health issues. जो environment के वजह से भी health issues हो रहे हैं, we can use this fund to overcome that particular challenge. Now targets of the eco tax के क्या क्या targets हैं? In India, eco tax can be targeting 3 main areas. First is differential taxation on the vehicles, transport में purely जो कि oriented होती है efficacy on GPS based congestion charges. उसके अलावा द एनर्जी सेक्टर कैन बी बाय बी टैक्सिंग फ्यूल, जो कि अलग अलग लेवल पे एनर्जी जनरेशन होती है, वहाँ वी कैन हैव टैक्सेस. अनदर इज वेस्ट जनरेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. सो दिस इज हाउ द इको टैक्स टारगेट कैन बी शेड्यूल्ड एंड वी कैन अकॉर्डिंगली वर्क ऑन दैट. The tax revenue can be generated through eco taxation. So eco tax as a concept is very important for your general studies paper 3. So make sure you collect in ample point so that you can write that in examination. Now adopting an environmental fiscal reform is the need of the hour. So India को ये ज़रूरत है that should adopt a environmental fiscal reform as it will reduce environmental pollution and other resources that is being generated and impacting our healthcare sectors. Environmental fiscal reform will reduce pollution, definitely it will reduce pollution and generate resources to finance our healthcare sector also. Now coming to the other news, that is concern over the new norms of appointment for the auditors. This is the last news that I'll be covering. So important for your general studies paper 2, important aspects of governance, transparency and accountability. So अभी recently RBI ने एक statutory guideline दी थी जहाँ पे they have asked that statutory auditors जो रेस किए जाते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं कंपनीज में, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेस की गई है. सो RBI ने ये गाइडलाइन काफ़ी पहले दी थी, बट इसके आफ्टर स्टडी पीपल फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स दे हैव स्टडी एंड दे हैव रेज्ड कंसर्न विद द गाइडलाइन रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी हायरिंग ऑफ द ऑडिटर्स. तो ये मेन न्यूज़ है. तो जितने भी NBFCs हैं उन्होंने एक वरीसम दिखाया कि जो नई गाइडलाइन है ऑफ हायरिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज कई ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं दे हैव बीन ऑलरेडी फिट टू बिल्स, और स्पेशली इन द मिडल ऑफ द ईयर दिस इज अ टफ टाइम टू फाइंड इट. वी आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ द ईयर, राइट. सो न्यू नॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं, व्हाट RBI हैज़ यूज्ड. सो अकॉर्डिंग टू RBI सर्कुलर, इट रिक्वायर इमीडिएट rotation of an auditor firm. It can have completed 3 years for a particular entity. तो 3 साल अगर किसी auditor ने complete कर लिया उस firm में, so you need to interchange. They have to change it. And joint auditor have to be mandated in the banks and NBFCs with the asset worth of 15 crores and more. So these are some of the factual point that you need to learn. और eligibility की अगर बात करें, so the auditors have that has to be tightened. जो eligibility criteria है वो बहुत tight होनी चाहिए. And the circular made applicable for the financial year 2021-2022 that except जो NBFCs हैं that should be implemented in second half of the financial year. So this is how the norms was changed, and they are asking to implement to all the NBFCs and other people who are appointing the auditors. Now procure for appointing auditors, क्या क्या procedures हैं, basically क्या क्या procedures हैं, किस तरह से appointment की जाती है. So the identification and evaluation of 3 or 4 firms each having vacancy has to be done by the audit committee. उसके बाद उसकी approval होती है, that is being shortlisted by the board. Final approval मिलती है stakeholder से. उसके बाद जो last है, last NOC चाहिए होती है RBI से. Then only an auditor can be appointed for any company. So this is how the procedures work, right? So this was all about the news, and we'll also see the rationale behind the RBI move. What are the rationale behind this move? So RBI said that the new norm is aimed at preventing frauds, जो भी hidden bad loans हैं, जो cozy relationships हैं auditors के साथ, and even the companies and auditor can be reduced, and it will help cleaning up the auditing system in the country. So this is the main rationale behind RBI move, right?
Now, what are the concerns that has been raised by the Federation of CII, that is Confederation of Indian Institutes? They said कि जो current norms हैं RBI के that require mid-term resignations of the auditors, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. चेंज इन द ऑडिटर इन द मिडल ऑफ द ईयर वुड बी नॉट लुक्ड फेवरेबल, क्योंकि जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन हैव टू डू अ लॉट इन द मिडल ऑफ दिस ईयर. सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एक मिनिमम इंगेजमेंट 5 साल के लिए कंपनीज एक्ट में मेंशन है, बट आरबीआई ने उसको चेंज करके 3 years करने की बात की गई है, राइट. सो लेट्स सी हाउ टेंटेटिवली दिस इज शॉर्ट नोटिस हैज बीन गिवन एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट विद प्रेजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. Now moving to the MCQs question. Before I go with MCQs question, just to tell you the answers of yesterday questions, जो कि Saturday के correct answers थे, उसको आपको मैं बता दूँ. For the correct option A is C, और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की C है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगेन C. So for both the question the correct option is C. Now consider the following statement regards to the inflation. So this is an economic question, economics based static question. It measures the average price in the basket of commodities and service over the time, and inflation is an indicative or decrease in the purchasing power of a unit in the country currency. So I think many of you must be aware of this concept. So if you read any sort of books, Indian Economy by Ramesh Singh or any other book by Sanjeev Verma, so it will be very easy for you to answer. So just let me know how many of you know the correct answers. Second is from the environment portion. With regards to Great Indian Bustard, consider the following statement. The Great Indian Bustard is one of the heaviest flying bird in the world, and the birds happens to be the state bird of Madhya Pradesh. So both statement is correct or not, that you have to decide, and you have to let me know in the comment section down below. So do participate, write your answer in the comment section. So this was all about daily news analysis and editorial followed by the question answer. If you have any other concern, you can let us know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.